दूसरे शॉर्ट लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है, और इस शॉर्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस डिस्टिंक्शन का यानी कि ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल में जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, हमें ऑलरेडी पता है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल सिंपली वो अमाउंट इंडिकेट करता है जहाँ तक एक कंपनी जा सकती है। इन शॉर्ट, बाय डेफिनेशन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल सिंपली वो मैक्सिमम अमाउंट इंडिकेट करता है जहाँ तक आप जा सकते हैं। That is the maximum amount of share capital that a company can issue. So let's say there is a company that has authorized share capital up to 10 lakh rupees. अच्छा, और पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? सिंपली वो अमाउंट जो जितना कि कंपनी ने इशू किया हुआ होता है। द अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी हैज़ इशूड इज़ कंसिडर्ड, दैट इज़ इट्स कॉल्ड एज इशूड शेयर कैपिटल, or it's also called paid up share capital. So in our example, अगर authorized share capital let's say 10 lakh rupees है, तो अगर for example इसी कंपनी में issued share capital 5 lakh rupees है, तो issued share capital which is the same as paid up share capital is half of the amount of authorized share capital in our example. अच्छा, ये तो था एक क्विक रिकैप इन केस आपको याद नहीं है या फिर आपने वो ऑलरेडी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैं ऑथराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल का डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो कि इस लेक्चर का मेन की पॉइंट है। एंड इस की पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड 1 मिनट के लिए सोच के बताएं कि इन दोनों अमाउंट में से एक तो है ऑथराइज शेयर कैपिटल जो कि हमारे एग्जांपल में 10 लाख रुपीज़ है, एंड दूसरा अमाउंट है पेड अप यानी कि इशूड शेयर कैपिटल जो कि 5 लाख रुपीज़ है। तो सोचकर आपने बताना ये है कि इन दोनों में से लायबिलिटी किस अमाउंट की है। लायबिलिटी यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी गोज़ इनटू लिक्विडेशन एंड कंपनी हैज़ अनपेड डेट्स, तो जो शेयर होल्डर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कौन सा अमाउंट रिप्रेजेंट करता है, तो लायबिलिटी कहाँ तक है। Okay, I'm presuming that you have paused the video and thought about it. So the answer to this is that the liability is basically represented by the पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि हमारे एग्जांपल में जो पेड अप शेयर कैपिटल है दैट्स 5 लाख रुपीज़। सो दिस कंपनीज लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू 5 लाख रुपीज़ ओनली, दैट इज़ इशूड शेयर कैपिटल वो अमाउंट बताता है कि कंपनी की लायबिलिटी किस हद तक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि एक ले पर्सन को, लेट्स से कि आप तो फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं, लेट्स से कि आपने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना नहीं शुरू किया होता, लेट्स से यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड मे बी यू आर अ डॉक्टर और इन एनी प्रोफेशन इन विच यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, एंड लेट्स से दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी and let's say that you're going to give money on credit to a company. How are you going to know as a lay person how much the company is going to be liable for, यानी कि कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होगी in the event of liquidation, ये आपको कैसे पता चलेगा। एंड दूसरा सवाल ये है कि ये पता चलना, ये जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आफ्टर ऑल, वाई शुड यू नो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर द अनपेड डेट्स ऑफ द कंपनी। And this fact becomes significant, that is ये वाला fact important तब हो जाता है in the event of the company's liquidation, like I said already. And as a creditor, this is important because you should know that the liability of the shareholders is going to be limited to that amount only and not up to the maximum amount, that is the liability of the shareholders in our example is going to be limited up to 5 lakh rupees only, and if all of the shares are already paid for, that is they are fully paid for, then the shareholders are not going to contribute anything towards the unpaid debts of the company in the event of liquidation. So just remember that you should not be fooled by the fact that a certain company has a huge amount of authorized share capital, because authorized share capital does not indicate the liability of the company. So as a creditor, you should instead focus on the amount of the issued share capital, that is the paid up share capital of a company. And well, obviously the next question that arises is, how is a creditor going to become aware of what the authorized share capital is and what the paid up share capital is in a certain company?
And the answer to that is given in section 25, which makes it compulsory for a company to issue adverts and notices. And the most important point to notice about section 25 is that whenever a company mentions its authorized capital in any advertisement or notice or in any statement which contains the authorized share capital of the company, then it is mandatory for the company, it's obligatory, it's compulsory for the company to also always mention the amount of its subscribed, that is its issued or paid up share capital, that is the amount that is actually subscribed for. And last but not the least, it's important to remember that both of these pieces of information, that is the amount of the authorized capital and the amount of the paid up capital, have to be stated in equally conspicuous letters, that is in equally prominent letters and in an equally prominent position. So this simply means that it's not going to be sufficient if a company simply states its authorized capital in huge, large font size letters and instead chooses to state its paid up share capital in very small font sizes, because obviously, needless to state, the larger script is going to be much easier to read and it is going to draw the attention of anybody who comes across that advertisement or notice, and of course the smaller script may easily be ignored or may not be seen as easily. So it's important to remember that each of these pieces of information, that is both the authorized and the paid up share capital, have to be stated in equally prominent positions and equally conspicuous letters. And just in case you don't know what conspicuous means, let me just quickly explain that इसका मतलब simply ये है कि आपने जिस तरह से जितने वाज़े तौर पर authorized capital बयान किया है, उतने ही वाज़े तौर पर आपको paid up capital भी state करना ज़रूरी है according to the requirement of section 25 of the Companies Act 2017. Okay, so before I conclude this video, let me just leave you with a very quick and easy question so that you can immediately apply the knowledge that you have gained in this lecture. So the question is as follows: if a company has authorized share capital of 8 lakh rupees and the paid up share capital is 4 lakh rupees, that is the issued share capital is 4 lakh rupees, and let's presume that the value, that is the nominal value, the face value of each share is rupees 10 per share, and all of these shares are fully paid. So the question is, what is the maximum liability of the shareholders in the event of the company's liquidation? And the answer to this is pretty simple, so I'm not going to answer this in this lecture. In case you're not clear about what the answer should be, you can ask in the comment section below.